मौजूद दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए नेक्स्ट एपिसोड उर्दू डबिंग में देखने के लिए। शुक्रिया। मैं रात को फिर आऊँगी। मेरे पास निकिया की खबरें हैं, हम बहुत सी बातें करेंगे। मैं उन्हें आज रात के लिए तैयार रखूँगी और हो सकता है उस खुशबू से नूरगुल तुम्हारे करीब आ जाए और तुम्हारा दीवाना हो जाए। मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अम्मी जान, नूरगुल को वहाँ छोड़ने की कोई तो वजह होगी। तुम जानती हो कि अर्तुगरुल अपने बहादुर को पीछे नहीं छोड़ता। अगर उसने नूरगुल को छोड़ा है। अम्मी जान, क्या मतलब है? नूरगुल तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, वो किसी से क्या लड़ेगा? हम अपनी मंजिल के करीब होंगे और वो हम पर भूखे भेड़ियों की तरह चिपटेंगे और ना तलवार के सामने टिक सकते हैं। अगर तुम दुश्मन के साथ तदबीर कायम करके बर्तरी कायम नहीं करते तो पहले से ही जंग हारे हुए हो तुम। अर्तुगरुल ने कोयल वाला काम करना चाहता था। कोयल वाला काम दूसरे परिंदे के घोंसले में रख देती हैं। तुम्हें मालूम है क्यों? ताकि जब ये फूटे ताकि उसकी ज़िंदगी पर मजबूत गिरफ्त का मौका मिल सके। आ जाओ अब्दुर्रहमान। हलीमा सुल्तान, हमारे जवान दफन के लिए तैयार हैं। लेकिन अर्तुगरुल साहिब अभी तक उन्होंने कहा कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे तो वो ज़रूर पहुंचेंगे। हमें अपने शहीदों का जनाजा शाम होने से पहले ही अदा करना होगा। चलो मेरी बेटी। अच्छा, तो तुमने सबको मार दिया? हमने सबको मार दिया और हमने काय की तमाम कलीन को आग लगा दी थी और नूरगुल को तो मैंने अपने हाथों से काटा था। भाई, क्या किया आपने भाई? अगर तोकतामिश की मौत भी आपके हाथ में है। या अल्लाह पाक मेरे दिमाग को ऐसी सोच से रोक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं काय कबीले जाना चाहता हूँ, क्या आपको रास्ता मालूम है? मैं अर्तुगरुल साहिब के लिए एक पैगाम लेकर जा रहा हूँ। किसकी तरफ? जनाब, इससे आपका क्या तल्लुक़? मैं अर्तुगरुल हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं? मेरा नाम आलियार है। क्या बात है? बताएं मुझे। जंदार साहब आपको और आपके घर वालों को घर बुलाना चाहते हैं। हमारे बहुत से बहादुर शहीद हुए हैं, हम सोग में हैं और अपना बाबा को मेरा सलाम भेज रहा हूँ। हुजूर, इसी वजह से बाबा की दावत कबूल कर लें। इसे कबूल करें ताकि आपको थोड़ा सा भी शक है तो वो भी दूर हो जाए। क्या कल रात औराल साहब? जी हुजूर, वो कबीले में ही थे। मेरे बाबा असलहान, बहन मेरी बाबी। हमने बातें करके वक्त गुजारा। मैं काफ़ी वक्त से दमिश्क में ज़ेर तालीम था। मुझे कबीले में आया है बस कुछ ही वक्त हुआ है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझको अकेला नहीं छोड़ा। हुजूर, मैं जानता हूँ कि मेरे भाइयों ने आपके ग्राहकों को ख़राब किया है। याद रखें, मैं भी आपकी शुजाअत को समझता हूँ।
लेकिन आप भी ये याद रखें कि मेरे भाई ने नहीं किया। क्या यही वजह है कि आपके पापा ने मुझे बुलाया है? शुक्रिया भाई, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि वो आपको बुलाना चाहते हैं, आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं। चलिए, हर एक की तरह वो भी जानते हैं कि आप एक बड़े सिपाही और शफाफ बहादुर आदमी हैं। जानदार साहब से कहना कि मैं कल उनका मेहमान होऊंगा। शुक्रिया जनाब। ये बातोहान का खंजर नहीं है। अर्तुगरुल को इस खंजर का नहीं पता था। ये वो नहीं ले सकता। फिर कौन? हमें उसका सवाल और जवाब सिर्फ पित्रोस ही दे सकता है। जो आपका हुक्म उस्ताद सैमोन। हमारे शहीदों की रूहों के असाल और सवाब के लिए अल-फातिहा। आमीन। अम्मी जान अर्तुगरुल अभी तक नहीं आए हैं। वो ज़रूर आएगा। देखो, आ गया। मैं 5 कमरे देखता हूँ, अपने 5 बहादुर आदमियों की कब्रें। ये उस सरजमी पर हमारे पहले शहीद हैं। लेकिन याद रखें, ये आखिरी नहीं होंगे। आज का दिन गम का दिन है। जब तक ये ज़मीनें हमारी नहीं हो जाती, ये गद्दार गुंडे हर जंग में हमारे मुखालिफ होंगे। हर रोज़ हम एक बड़े गम में जलाएंगे। हम दुश्मन की गद्दारियों से हारेंगे नहीं। हमको दोनों जहानों को मिलकर हमें गंदम की तरह मिसलने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि आप सब, चाहे इससे आपकी नस्ल ही मिट जाए, इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। तारीख की सबसे गाड़ लगाने वाली, पीठ पर छुरा घूमने वाली और शैतानी लड़ेंगे। शिकस्त हमारे शान नहीं। ये ज़मीनें भी दुनिया की दूसरी ज़मीन की तरह हैं। हमने बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त किया। अब हम इस सरजमीन की जड़ों को काटेंगे। अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को इस जंग में शहादत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। मुझे खंजर नहीं मिल सका। तुम अपना खंजर संभाल नहीं सकते? तुम अपने आप को स्पाई कहते हो बेगैरत? चले जाओ। कई सिपाहियों का जो आपने खून बहाया वो अभी तक साफ है। इस खंजर को भी साफ करें, उसे साफ करें। आप अपनी अंदर वाली गलाजत को भी पाक कर लें। भाईजान, और कितना इल्जाम तुम मुझसे चाहते हो? क्या बहुत हो गया अब। खंकारना और छंकारना बंद करो बस। भाईजान, आपने जो किया मैं और पापा दोनों जानते हैं। अरे यार भाई, मेरे भाई, हमने तो तुम्हें आलम बनने दूर भेजा था, लेकिन अब ज़ाहिर तुम मंगोलों की तरह निकले हो और दुश्मनी करते हो हमसे। हमने आपको जांच लिया है, तुम जानते हो क्या है। अरे यार, तुम दोनों मेरे हिमे में आओ। बहुत हो गया बाबा। अलियार की बातों पर क्या आपने भी यकीन कर लिया? मैं कब तक अपने बहन भाइयों के झूठ बर्दाश्त बर्दाश्त करता रहूंगा? बाबा, क्या हो रहा है यहाँ? चुल्पान खातून, क्या तुम कुछ जानती हो? बाबा, अवराल, मैं तुम्हारे हर नीच मंसूबे के बारे में जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे कबीले के सबसे बड़े दुश्मन हो। पहली औलाद ना होती तो मैं तुमको बहुत पहले मार चुका होता। बाबा, अलियारा तुम्हारी जान बचाई है, ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि सब सिपाहियों की भी बचाई है। बाबा, इस बातून कुत्ते का खंजर तलाश करके और अर्तुगरुल को उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। और अर्तुगरुल तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि मैं उसे यकीन दिला सकूं कि तुम बेकसूर हो। जब वो यहाँ है तो मेरी उस मोटी तुम उनको जितना मुमकिन हो सका सहूलत दोगे। तुम उन्हें वो इज्जत दोगे जिसके वो काबिल हैं। समझ गए? समझ गया।
Alplerimizi kim şehit ettiyse Körpınar'a bizden önce giden de oydu. Bizi pazara kadar takip etmişler. Burnumuzun dibine kadar girmiş soysuzlar Artuk Bey. Belli ki gerçeklerin ortaya çıkmasından başına geleceklerden korkan biridir beyim. Korkunun ecele faydası yoktur Artuk Bey. Allah'ım, sen bana Müslüman kardeşlerimin kanını döktürme. Sen ne dersin beyim? Candaroğlu Ural Bey'den şüphe ederim Artuk Bey. Maalesef başka ihtimal kalmadı. Kerimleri satmamızı hazmedemedi. Bizi bu topraklarda hiç istemedi. İnşallah Ural Bey 3-5 altın için Müslüman kardeşlerine kanını dökecek kadar kansız biri değildir beyim. Sadece bu da değil. Candar Bey'in bizi apar topar otağına davet etmesi. Bunun için özellikle oğlunu göndermesi. Ural Bey'in bana savurduğu tehditler. Eğer öyleyse iki obadan da çok can gidecektir beyim. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacaktır. Candar Bey oğlunu feda etmezse beyim, bizim onlarla savaşmaya gücümüz yetmez. Yolunu buluruz Artuk Bey. Biz de ağacı kökünden sallarız. Eğer Candar Bey adaleti sağlayamazsa
Üstad Nikola D'Artagnan. Sadık bekçilerinizin yuvasına hoş geldiniz. Üstad Nikola D'Artagnan. Tanrı sizleri kutsasın. Vaftiz Cihaya. Buraya gelme sebebim tahmin edebileceğiniz gibi Ertuğrul. Ertuğrul hakkında bilmen gereken ne varsa hepsi burada yazıyor. Bu defterde yazan her şey bizzat Antakya Haçlı Kontluğundan Üstad Petrucci'nin sözleridir. Üstad Petrucci Ertuğrul tarafından öldürüldükten sonra bu defteri Türklerin elinden kurtulan genç bir şövalye bulup bize teslim etti. Son satırları da o yiğit şövalye yazmıştır. Titus'u da o mu öldürdü? Evet. Savaş başladı Vaftiz Cihaya. Benden ne istiyorsunuz? Ertuğrul'un burada olması tesadüf olamaz. Senden onu derhal öldürmeni istiyoruz. Petros, sevgili evladım. Hoş geldiniz Üstad D'Artagnan. Hançeri alıp adamlarımızı öldüren Murat'ın kardeşiymiş. Aslan. Hayır. Aliyer. Erciyes'in, Toros'un doruklarına bir kefen gibi saran sisleri içinde. Ne göz gözü görüyor, ne söz sözü işitiyor. Ölümle yaşamın, vicdanlı altının, gelecekle körlemiş olanın cengi devam etmekte. Biz de tam bu cengin ortasındayız beyim. Herkes birbirinin yüzüne gülüp ticaretini yaparken, altın alıp verirken aslında birbirlerinin mezarlarını kazmakla meşguller. Konstantiniye'yi yakıp yıkan Haçlılar bir yanda, Bizans'ı bırakıp kaçan imparator diğer yanda, bu topraklara yurt tutmak için gelen bizler bir yanda. Kılıç artıkları, eşkıyalar, korsanlar bir yanda. Çıfıt çarşısına dönmüş bu bereketli toprakların ahalisi kan alıyor. Bu öyle bir savaştır ki beyim. Dediğin gibi varlık ve yokluk savaşıdır. Etrafımızı bir kefen gibi sarıp bizleri kör eden bu sisi yaracağız. Kılıçlarımız kınından bir kez çıkacak Artuk Bey. İnşallah beyim, inşallah. Çıktığında da bu topraklar adalet ve özgürlükle tanışacaktır. Beyim bu yüzden mi Caner Bey'in yemek davetini kabul etti? Her şey Candar Bey'in otağında başlar Halime Sultan. Hanın loş ışıklarında da son bulur. At izi it izine karışmadan bu siste yolumuzu bulmak zorundayız. O yüzden Candar Bey'in davetine icabet edeceğiz. Demek oyun oynamak istiyorsun beyler. Dövüşmeyi bilen yiğit bir düşmandan daha tehlikeli biri varsa o da oyunu görüp bozacak kadar zeki olandır. Kurduğumuz oyun bozuldu. Lanet olsun! Kafanı koparacağım senin. Şimdi ne yapacağız Üstad Şuan? Ertuğrul Bey'e Alplerinin katilini vereceğiz. Ne pahasına olursa olsun iki Müslüman baba birbiriyle savaşmalı. Kardeş kanı lanetlidir.
Akmaya başladı mı kimse durduramaz. Doğru. Doğru dersin Üstad Sinan da. Elimizde Ural'ı ele verecek tek kozu da kaybettik. Yanılıyorsun sevgili Petrus. Elimizdeki en büyük koz Ural'ın hırsıdır. Bu hırs onun da babasının da sonunu getirecek. Aliyar aklınca savaşı durdurmaya çalışıyor. Ama savaş çoktan başladı. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Allah'ım sen günahlarımı affet. Oralı ben yetiştirdim. Çağdar babasına umut olur diye üzerine titredim. Şimdi babam günahlarımın bedelini verecektir diye korkarım. Oğlumun içindeki iblisi öldürmeme yardım et Allah'ım. Bu iyiliğini hiçbir vakit unutmayacağım aslanlar. Var olasın. Dayıların beyi. Cevval biri. Gece düşmanla cenk edip diz çöktürmüş. Er gibi er. Eyvallah aslanlar. Dilinin altında tuttuğunu diyesin artık Aslıhan Hatun. Babam da, sen de, Ural'da ağzınızı ne kadar mühürlerseniz mühürleyin. Hakikati gizleyemezsiniz Çolpan Hatun. Aslıhan, açık konuş. Ertuğrul Bey'in alplerini katledenin kim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Hatun! Nereden çıkarırsın bunları? Ural'dı. Bal gibi sen de biliyorsun bunu. Ural benim beyim, senin de abindir. Bana maval okuma Çolpan Hatun. Ural hepimizi felakete sürüklüyor. Avradı olarak sana düşen erine sahip çıkmandır. Diyeceğim budur. Yalan. Ural beyimi suçlayamazsın. Abine bir iftiranı daha duyarsan bunun bedelini ağır ödersin. Bu da benim sana son lafımdır.
götüreceğimiz hediyeleri hazır ettim. Bunlar güzel hediyelerdir Halime Hatun. Pahada hafif olsalar da itibarımızı göstereceklerdir. En büyük itibar anamla avradımla onların otağına konuk olmandır. Kıymetini bilirlerse elbet. Ural Bey denen adamdan bunca şüphem varken Candar Bey'den de, Aliyar Bey'den de, Aslan Hatun'dan da zerre şüphem yoktur. Aslan Hatun kim? Candar Bey'in kızıdır. Malları satmamda çok yardımcı oldu. Öyle mi? O vakit pek iyiliksever bir hatunmuş. Yaran iyice açılmış. Kapanır elbette. Ama kapanana kadar başıma bu belayı açanlar belalarını bulacaklar. Bundan zerre şüphem yoktur beyim. Lakin Batuhan'ın bıçağı Aliyar'ın eline nasıl geçti? Bu işin arkasında kim var? Çok geçmeden bunu öğrenmek mecburiyetindeyim. Turgut'u bulan Simon'un kardeşi değil miydi? Neydi adı? Maria, Ya o bulduysa hançeri? bu halde Simon da Artık ok yaydan çıktı beyim. Candar Bey seni iyice göz hapsine alacak. Attığın her adımı takip edecek. bu yetmezmiş gibi bir de beni Aliyar'ın korumasına verdi. Aklınca. Aslıhan da bilir her şeyi. Artık vaziyet idare edilemez bir hal almıştır beyim. Sen ne demek istersin Çolpan'ım? Gayrı obanın da, pazarın da iplerini ele geçirme vaktin gelmiştir. Ayak sürüp Simon'la babana tabi durdukça ikisi seni diri diri gömecek. Mezarına toprak niyetine de Aslıhan'la Aliyar atacaklar. Buna izin vermem. Veremem. Önüme çıkan herkesi ezer geçerim. Bunu bilmez misin Çolpan'ım? Baban, onu da ezip geçer misin?
çatlara. Çok mahcubum bebeğim. Bizi bin yıldır bu cihanda ayakta tutan altın değildi Hacı Turan Usta. Bundan gayrı da olmayacaktır. Haydan gelir buraya gideriz. Bizim yolumuz da menzilimiz de bellidir. Bu ihtiyar kafam bana doğru yolları göstermedi. Ama bir defa daha gidersem doğru yolları bulurum. Bana bir fırsat daha ver beyim. He? Artık yeter Hacı Turan Usta. Git dinlen. Eğer bana borcunu ödemek istersen